हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो बनाएंगे उनके आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। Multifunctional keyboards provide additional function beyond the standard keyboard. Many are programmable, configurable computer keyboards, and some control multiple PCs, workstations, and other information sources. Usually in multi-screen work environments, users have additional keys functions as well as the standard functions and can typically use a single keyboard and mouse to access multiple sources. Multifunction keyboard may feature customized keypads, fully programmable functions, or soft keys for macros, presets, biometric or smart card readers, trackballs, etc. New generation multifunctional keyboard features a touchscreen display to stream video, control audio, visual media, and alarms, execute applications, inputs, configure individual desktop environments. Multifunctional keyboards may also permit users to share access to PCs and other information sources. Multiple interfaces, serial USB, audio, Ethernet, etc. are used to integrate external devices. Some multifunctional keyboards are also used to directly and intuitively control video calls. Common environments for multifunctional keyboards are complex, high-performance workplaces for financial traders and control room operators, emergency services, security, air traffic management, industry, utilities management, etc. तो दोस्तों, ये जो मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड्स होते हैं ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं, डैम्स वगैरह के पास, या और भी दूसरे जो होते हैं बड़े बड़े अदारे जो होते हैं उनमें यूज़ होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में, या मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग के लिए कंपनीज होती हैं जो कि कोई भी चीज़ बनाती है, उनमें ये कीबोर्ड्स होते हैं जो कि मशीन को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ होते हैं।